मनी हेल्थ शो में हूं नेहा बजाज और अपने हर वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं एक सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से। और हाँ, वीडियो देखने से पहले सबसे पहले जी मनी हेल्थ शो के यूट्यूब पेज पर जाइए और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल आइकन। आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर किरण नीरकर से, जो कि एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन है। पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आकार एस्थेटिक्स नासिक के डायरेक्टर, ओनर, फाउंडर हैं। नॉट ओनली दैट, मेंबर है इंडियन एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स और कई सारे लोगों की लाइफ्स को इन्होंने एक नया रूप दिया है, ट्रांसफॉर्म किया है। सो सबसे पहले डॉक्टर किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते। नमस्ते। एंड डॉक्टर किरण, आज हम आपसे उस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आजकल बड़ा सॉट आफ्टर है, लेकिन इसके बारे में जब भी बात होती है बड़े दबे छिपे शब्दों में होती है, लोग कतराते हैं, जो है ब्रेस्ट रीशेपिंग, जो कि एक ओवरऑल हर महिला की फिगर को इनहैंस करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। तो हमारे सभी व्यूअर्स को आप ये बताइए कि ब्रेस्ट रीशेपिंग क्या होता है एंड व्हाट ऑल कम्स अंडर दिस। Breast reshaping encompasses three major things. First is breast augmentation for increasing the breast size or bust line. Second is breast reduction for decreasing the breast size, wherein decreasing the breast size wherein women are facing problems with their heavy breast. Right. And third one is breast lift or mastectomy, wherein the nipple area position or breast are pointing downwards, and with mastectomy or breast yes, saggy breast, exactly. So we correct the position of the nipple area as well as breast on the chest wall to its natural location and make the breast look more youthful. Okay. These three things are there in the breast reshaping. Okay, so ये जो तीनों प्रोसीजर्स हैं ये ब्रेस्ट रीशेपिंग में आते हैं। एंड सर, हमेशा से बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी जो जानकारी है वो पूरी नहीं है, तो अगेन जब भी हम ब्रेस्ट इम्प्लांट्स या फिर कोई भी ऐसे बस्ट रीशेपिंग सर्जरी के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि सिलिकॉन्स लगेंगे, लेटर ऑन फीडिंग में दिक्कत होती है और भी कई सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आप यू गोइंग अंडर द नाइफ। सो टुडे आई वांट टू नो कि क्या ब्रेस्ट रीशेपिंग के नॉन इन्वेजिव तरीके भी हैं? So I'm afraid to say no, because there are no non-surgical options for reshaping your breast size. Whatever breast augmentation creams, massage or oils are available in the market. Capsules also are available, but those are just to fool you. Your patient is not going to get any benefit out of it. Patients are just going to lose their money and patience. And ultimately, surgery is the only mainstay for increasing the breast size. For increasing as well as for decreasing. Okay. And sir, also for correcting the sag. And so there are a lot of ads also, and I've heard there are a lot of hormonal therapies also to increase the size. So again, you strongly do not advise any of these? I strongly do not advise these things, but just to comment on hormonal therapies. Hormonal therapies will be useful in a growing lady. Not when age of around say 18 is established, then hormonal therapy is not going to help a lot in increasing the bust size. Okay, so डॉक्टर किरण ने ये कहा है कि किसी तरह की कैप्सूल्स, ऑयल्स, मसाज क्रीम आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। सो बेटर होगा कि अगर आप चाहते हैं अपने ब्रेस्ट को रीशेप करना, तो इट्स बेटर कि आप एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन से ही कंसल्ट करें। एंड सर, अब हम प्रोसीजर जानना चाहते हैं। अगर हम बात करें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स यानी कि एनहांसमेंट की, तो किस तरीके से ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है और इसके फर्दर क्या रिस्क्स और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कोई? See, breast implants or breast augmentation is done using silicone implants. These all are FDA approved implants we are using for augmentation. Classically, the most commonly used method for breast augmentation is plastic surgeons make a cut in the lower part of your breast, or technically we call it as inframammary fold, the junction where the place where your breast as well as chest wall meets. This junction is the inframammary fold. And from there we make a small cut around 4 to 5 centimeters. We make a pocket adequate enough for the implant to sit, and the implant is inserted over there.
I can show you the implant. This kind of Okay. breast implant. This is actual silicone gel implant which we use for breast augmentation. And there are no other, as I said earlier, there is nothing else which can replace the breast augmentation using implants. However, fat injection is currently in vogue now, wherein we can increase the bust size to a certain extent by using patient's own fat. In a single procedure, you can add only limited amount of fat. Okay. So repeated procedures may be required for augmentation if we are resorting to fat grafting for the breast. Okay. And sir, again, because आजकल वही जैसे मैंने बोला कि people are not fully aware, जानकारी पूरी नहीं है. So silicone implants के साथ कई सारे myths associated हैं कि later on breast feeding में दिक्कत होगी, ये कैंसर का कारण बन सकता है, आप जिम नहीं कर सकते हैं. So what do you have to say on these things? See, first of all, silicone implants are FDA approved. That itself indicates that they are safe to use. They do not interfere with the feeding or lactation. Achha. Neither by themselves they cause cancer, nor they interfere with the diagnosis of cancer. They are natural to feel. Okay. And look-wise also they give natural bust line to the female. And other than that, there are no other complications associated with the breast implant procedure. ओके. एंड सर, अगर किसी ने ये प्रोसीजर किया है तो उसको क्या बार-बार 5 या 6 साल बाद क्या दोबारा कुछ ऐसा करवाना पड़ता है, और डॉक्टर के विजिट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आफ्टर दिस प्रोसीजर? See, after procedure, typically we advise patients to pay weekly visits for a couple of weeks. After that, once in 6 months, at least for 3 to 4 years. Okay. And then patient need not visit their plastic surgeon regularly. It is not required at all. Other thing which you ask is regarding replacement of the breast implants. Earlier it was like the earlier generation implants needed to be replaced every 10 years. But now the implants which we are using currently are they do not require any kind of replacement as such. Okay. And sir, are there any like complications later on in life? Because अगर किसी ने 25 साल में कोई इम्प्लांट कराया है तो आगे 40 या 50 साल की उम्र में जाकर कुछ कहीं ना कहीं वो दिक्कत दे सकता है, कोई पेन किसी किस्म का हो सकता है. बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आफ्टर द इम्प्लांट्स ब्रेस्ट पेन इज आल्सो कॉमनली ऑब्जर्व्ड. Not really. See, when as the lady ages, as the woman ages, certain amount of sag is bound to happen, even with or without implants. So that occurs even if the implant has been inserted maybe 10 years back. Right. So that's inevitable. But if you ask for breast pain specifically, in less than 1% patients, there might be some amount of pain. That is called as breast implant syndrome. The patient feels discomfort because of breast implant and some constant nagging pain in the neck or breast area. And so after the breast, that is very uncommon. Okay. And breast is very uncommon. Okay. And breast implant procedure के बाद gymming, exercise, workout कितने दिन तक नहीं करना है और उसके बाद क्या regular कर सकते हैं? See, after the procedure, patient can walk out immediately the same day or maximum by next day. She can start routine walk and routine daily activities next day. And she can start jogging after a week. Okay. The only thing which we advise our patients is to use sports bra so that while moment of the breast, there will be less amount of discomfort. Okay. And sir, since you said कि कोई incision बनाना पड़ता है, तो क्या इस procedure में scarring भी देखी जाती है, कोई निशान रह जाता है after the procedure? See, as with any surgical procedure, after breast implant procedure, there will be a fine line scar which will be completely hidden by the breast mount. It is not hidden. I mean, the scar is not exposed when you are wearing clothes. Okay, so यानी कि minimal amount of scarring है, but वो दिखती नहीं है, which is almost negligible. Okay, so sir, now मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है
कि प्रोसीजर के बाद कभी-कभी आपके पास पेशेंट्स जो आते होंगे, आप उन्हें क्या चीजें मना करते हैं कि ये बिल्कुल नहीं करना है? What are the preventive measures post the surgery that a woman has to follow? There are no specific preventive measures after breast augmentation per se. Only thing they have to avoid heavy exercises for a period of a month, and after that they can start all kind of exercises and daily routine. And we, as again, I mean, with or without implant, we advise not to undergo any sort of trauma over the chest. That's it. So heavy weight training वगैरह नहीं करनी है उसके बाद? No, heavy weight training can be done after a month after procedure. Okay. And sir, मेरा एक और सवाल है आजकल, because considering of course now everybody is inspired by media, the world of glamour and social influencers. So there are a lot of women maybe who do not require breast enhancement clinically, but still they want to get it done to look more beautiful or to give their physique a new shape. So आप उन्हें क्या advice करना चाहेंगे? See, my best advice is please stay away from all sorts of breast enhancing creams, oils, or sort of massages, and consult your plastic surgeon for whatever requirements you are having. And plastic surgeon will be in best position to guide you exactly what procedure is well suited for considering your physique as well as your body frame, and he will advise the best procedure for you. Okay. एंड सर एक और चीज मुझे जाननी है, जो मेरा आखिरी सवाल है, कि ब्रेस्ट एनहांसमेंट से पहले क्या पेशेंट को कुछ टेस्ट्स आप करते हैं? कोई एक्सरे होता है? व्हाट आर द प्रीरेक्विजिट्स फॉर दिस सर्जरी? Certain basic blood investigations are required before any kind of surgery wherein general anesthesia is used. Like breast implants are done under general anesthesia. So like complete blood count, then viral markers, and then kidney function as well as liver function needs to be checked. ओके, सो जो बेसिक टेस्ट होते हैं किसी भी सर्जरी से पहले ही, वही ब्रेस्ट एनहांसमेंट सर्जरी से पहले भी होते हैं. एंड अगेन अगर आप एक अच्छे सर्जन से मिलती हैं तो आपकी सर्जरी सक्सेसफुल भी होती है. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण, आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में जुड़े और आपने सबको अवेयर किया और ये भी बताया कि सर्जन से मिलना बेटर है, ना कि ऑयल्स क्रीम्स का सहारा लेना. सो थैंक यू सो मच. राइट, थैंक यू. तो ये थे डॉक्टर किरण, जिनसे आज हमने बात की ब्रेस्ट रीशेपिंग के बारे में. अगेन जी मनी हेल्थ शो पे हम हर उस इशू पर, हर उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिस पर आप सुनना चाहते हैं एक्सपर्ट्स की राय. आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमारे एक्सपर्ट से, और आप क्या जानना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके हमें बता सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल. हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं नेहा बजाज लेती हूँ आपसे अलविदा. मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में नए सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ. Till then, keep watching G Money Health Show. अच्छी सेहत हमारा वादा. Bye bye.